Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah, oh my god, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah, oh, no way, I ain't gon' stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken. Need someone who could just go. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. So no way out. So if you are the guy who is following a proper timetable, making notes, attending classes, giving tests and doing PYQs, so congratulations man, you are on right track. बट अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो या फिर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो दैन यू हैव टू वरी मैन, यू नीड टू वरी. बट अगर अभी तक ये सब तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम रेस से बाहर हो या फिर अभी कह सकते हो आप ऑफ ट्रैक हो. सो अगर आप रेस में वापस आना चाहते हो तो यू हैव टू टेक 2 स्टेप्स. फर्स्ट, टेक ए डीप ब्रेथ एंड नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक 2 days ब्रेक. पहले दिन आपको रेस्ट करना है, प्रॉपर रेस्ट, बड़ी नींद, समझ गए होगे आप. एंड सेकंड डे आपको एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है. उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करना है. या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हैं, अगर बैकलॉग है या टेस्ट नहीं दे पा रहे हो या फिर ऐसे है कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उस प्रॉब्लम को डायरीज़ पे नोट करो. जो आपकी एक डायरी है उसके अंदर ये प्रॉब्लम नोट होनी चाहिए. और जो भी प्रॉब्लम होती है अगर आप उसको कहीं पे नोट कर देते हो 50% जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स आपने नोट कर ली हैं, अब उनके अंदर जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या सबसे जो टफ़ प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करना है. जैसे कि अगर आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हो तो जल्दी उठना है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड क्लासेस सबसे ज़रूरी हैं. उसके बाद में नोट्स, DPP, टेस्ट, ये सब अगर आप एक स्ट्रक्चर वे में करते हो तो शायद आप जो आगे आपसे भीड़ जा रही है उसको पछाड़ दें. या फिर ऐसा होगा एटलीस्ट आप रेस में तो वापस आएंगे. आप यहाँ पे आए किस लिए हैं? जेईई की प्रिपरेशन के लिए ना. तो ठीक है, फिर यही करना है. बस काम ऐसे करो. अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, अगर हो जाता है तो बेस्ट है. अगर नहीं होता है तो आपके मन में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि शायद और कर सकते थे. ठीक है, आप अपना पूरा पोटेंशियल लगा दो कि हाँ जो करना था वो कर लिया, इतना ही कर सकते थे, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ. ओके, दैट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.